The shocker that's coming in from Noida, a severely mutilated female body was recovered from a drain in Sector 108 on Thursday. Now, the police said that the body was found headless and without both hands, making identification extremely challenging at this point. Now, investigators suspect that the murder may have taken place elsewhere, with the body being dumped in the drain to hide the victim's identity. A special team has in fact been formed to probe all leads at this point. The police have even sealed the area, increased patrolling and are scanning CCTV footages from nearby lanes to trace the movement around the spot. Residents have in fact been urged to report any missing persons or unusual activity that they may have noticed. The incident, remember, has spiraled into a political flashpoint as well, as Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav has come out to allege that this reflects the true state of women's safety in Uttar Pradesh's most developed city. He has said that when the government is more focused on bulldozers, the driver's seat of law and order remains vacant. So these are the details that we in fact are bringing to you. And right now we have Himanshu Mishra joining us live from Noida. At the very top. Himanshu, a very good morning to you. आप पहले भी हमें बता रहे थे कि एक फोरेंसिक्स टीम के साथ भी पुलिस काम कर रही है अभी आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करने के लिए कि ये महिला थी कौन. सबसे पहले अभी टॉप प्रायोरिटी पे वो है कि थी कौन, उसके बाद बाकी का जांच शुरू होगा कि इनके साथ हुआ क्या कि ये इस हालत में पाई गई. बिल्कुल, देखिए, क्योंकि पहचान होना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए पुलिस जो है वो लगातार कोशिश कर रही है कि उसकी पहचान हो सके. अब देखिए, ये जो पूरा इलाका आप देखिए, ये जो सामने का मेन रोड आपको नज़र आ रहा है, इस रोड पर कहीं भी अगर कोई भी सीसीटीवी फुटेज लगा, कैमरे लगे हैं, तो पुलिस उनके फुटेज को खंगाल रही है. ये नाला कहाँ पर उसको डंप किया गया बॉडी को, ये जगह इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही है पुलिस, ताकि सबसे पहले ये पता लगे कि नाले में किस जगह पर बॉडी को डंप किया गया. तो एक इन्वेस्टिगेशन तो इस पॉइंट पर चल रहा है, एक टीम इस तरफ काम कर रही है, वहीं दूसरी टीम श्रेया इस तरफ काम कर रही है. जो आसपास के तमाम इलाके हैं वहां पर पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या कोई किसी महिला की मिसिंग कंप्लेंट पिछले 2-3 दिन में या एक हफ्ते के अंदर कहीं दर्ज की गई है, ताकि कोशिश की जाए उससे अगर इस्टेब्लिश हो सके. तो ये अलग अलग तरीके पुलिस जो है वो अख्तियार कर रही है ताकि महिला की पहचान हो जाए, क्योंकि एक बार जब पहचान हो जाएगी जिस तरीके से ये हत्या की गई है, तो ऐसे में पुलिस के लिए इन्वेस्टिगेशन का समझ लीजिए काफ़ी हद तक मदद मिलती है इन्वेस्टिगेशन में जब पहचान हो जाती है, क्योंकि उसके बाद कई तरीके होते हैं कि आपने किससे बात की, आपका मोबाइल डाटा खंगाला जाता है और तमाम जो लोग हैं जो जुड़े होते हैं उनसे भी पूछताछ होती है, और ऐसे में कातिल का पता लगा पाना उतनी मुश्किल नहीं होती. और शायद ये तमाम बातें कातिल समझता था, जानता था, इसलिए उसने बॉडी को अलग अलग पार्ट्स में किया और इस तरीके से डंप किया कि उसकी पहचान न हो पाए और वो पुलिस की नज़र से बचा रहे. लेकिन पुलिस जल्द से जल्द इस महिला की पहचान करने की कोशिश में जुटी है. जी जी हिमांशु, हमें ये सारी जानकारी देने के लिए धन्यवाद. वेल व्यूअर्स, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज एट दिस गिवन पॉइंट टू एस्टैब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ द वेरी victim that we are speaking of, because remember, both her hands and the head has been severed. In fact, let's take you through the details of what are the facts that we have so far about this gruesome murder that has been uncovered in a posh locality in Noida. It's a severely mutilated woman's body that's been found, a naked body that's been recovered from a drain in Sector 108 of Noida. Now, more importantly, the body was found in a state where it was headless and without both hands. That is extremely important because that is one of the clues that they were in fact counting on to identify the woman, but there is none. So which is why the forensics team in fact steps in at this given point to understand and to establish the identity. Now, cops have claimed that the body was in fact dumped in this state to hide the identity of the woman. It's a horrifying murder case that we are in fact bringing to light here, viewers, at this point. The cops, however, suspect at this point, and this is rather important, that the murder may have been committed elsewhere and then the body was in fact dumped in this very drain in Noida. Now,
So far, what we are given to understand on the investigation front is that SIT has been formed, the area where this body was dumped has been sealed, and the CCTV footages from these areas are being checked. Residents have also been asked to, in fact, report anything which might have seemed a little unusual to them, or any missing persons that has come to their notice at this given point. All of it is to be notified to the authorities at this given point. So yes, these are the facts that we have before us on this very particular case that's now being investigated into. But yes, the facts and the body in which state it has been recovered, it really, really reveals a gruesome crime that's been committed, which is now being investigated.